let's think of one complex number for now. So let's say you got a complex number that's here, and it has it's basically denoted by this letter Z. What about this length? इसकी origin से length कितनी है? इसकी origin से length कितनी है? So आप इसको किस तरह से क्या कहोगे आप इसको? This length we discussed at the start. This length is basically the modulus of Z. This length is the modulus of Z. अगर मैं कहूं कि ये length जो है वो modulus of Z है, तो I can represent it like this. This is modulus of Z that is representing the length of this line that I've drawn here. ठीक है? अब ये मेरे पास एक point Z है. अब इसके मुझे कोऑर्डिनेट नहीं पता कि क्या इसके रियल एक्सिस के ऊपर क्या है और इसके इमेजिनरी एक्सिस के ऊपर क्या है. Let's say I do not know about that. Okay, now it could be some number here. Let's say that's x, right? And there's some number here that is y. So this complex number z is basically x plus y iota. Okay. अब इसकी length क्या है? This is modulus of z. Now, if I say the modulus of z is equal to some number, so let's say modulus of z is equal to 3. Now, at which positions do you think this complex number can be? Because देखिए modulus को मैंने क्या कहा? Modulus has to be equal to 3. What does that mean? The distance of this point z from the origin should be equal to 3. That is what it means. Modulus of z being equal to 3. What does that mean? That the distance of this point z from the origin is equal to 3. Now remember your locus. एक point से अगर आपका distance constant है, एक point है आपके पास, that is the origin. एक point से आपका distance अगर constant है, that is given to be 3. इसका मतलब क्या है कि जो point z है, it can be anywhere on a circle. आप origin से अगर distance आपका 3 एक fixed distance है, so this is fixed distance from a point, that is the origin, that is 3. तो ये point z कहाँ पर हो सकता है? This point z can be anywhere on the circumference of this circle that I've drawn here. This point z can be anywhere on this. Okay? Does that make sense? So that is the first thing. So that's the most basic thing you need to know about the locus of complex numbers. इसका modulus क्या represent कर रहा होता है? इसका modulus represent कर रहा होता है the distance of that number from the origin. Now, if we have to draw all possible points, so if somebody was to ask all possible points, all possible complex numbers, yeah, all possible positions of z such that modulus of z is equal to 3, what that means is iska distance from the origin should be equal to 3. आपने ये find करना है all possible positions of z such that the modulus of z equals 3. This implies that the distance from origin is equal to 3. Okay? So that's fixed distance from a point. So remember your O-level locus, fixed distance from a point. क्या कहाँ पे हो सकते हो आप एक circle के ऊपर कहीं पे भी हो सकते हो. So circle के ऊपर आप कहीं से भी length measure करोगे. Origin से circumference की, this is 3. This is also 3. This is also 3. So this point z can be anywhere on the circumference of the circle. जो green circle मैंने यहाँ पे draw किया है, इस circle के ऊपर आप कहीं पे भी हो सकते हो. Okay. अच्छा, let's change this a bit now. What if you're saying the modulus is not equal to 3, but it's actually
less than 3. What do you think now? So अगर उसने कहा हो अब that the distance is less than 3 now. Equal to 3 के बजाय मैं क्या कर दिया अब? हमने इसको कहा let's make it less than 3. Where can this point Z now? Z be now? Modulus of Z is less than 3. So all possible positions of the point Z such that the modulus is less than 3. What do you think is going to be the locus of this point Z? Z kahan pe ho sakta hai in this case? Any ideas? 3 less than 3? क्या मतलब है? Basically इसमें जो प्रॉब्लम होती है ना वो सिर्फ नोटेशन अंडरस्टैंड करने में होती है. So if you understand this notation right now, it will become very easy for you. So modulus of Z being less than 3, what that means is इसका जो distance है from the origin, this should be less than 3. So that means you can be anywhere inside the circle. आप circle के अंदर कहीं पे भी हो सकते हो. So it's all the region inside the circle that I've shaded here. आप सर्कल के अंदर कहीं भी हो सकते हो. ठीक है, सर्कल के अंदर कहीं भी हो सकते हो. आपका जो ये डिस्टेंस होएगा फ्रॉम द ओरिजिन दैट विल बी लेस देन 3. और इसी तरह ये ग्रेटर देन 3 होता, you could be anywhere outside the circle in that case. Okay, now let's look at another case now. So what if you have something like this? Modulus of Z minus something. Modulus of Z minus, let's say, minus 4. And let's say this is given to be equal to, let's say 2. इसका क्या मतलब है? अब ये नोटेशन आप में समझनी है यहाँ पे, ठीक है? ये नोटेशन समझनी है. Z minus 4 लिखा हुआ है ना? Now Z is a point that is a variable that can move anywhere, right? 4 is a fixed point. अगर हम Argand diagram इसकी draw करें, it's going to look something like this, where we have the imaginary axis here, we've got the horizontal, the real axis here. सबसे पहले आप क्या करोगे? ये जो पॉइंट है आपके पास जिसको आप Z में से माइनस कर रहे हो, you plot that point here. तो 4 कहां पे होएगा? इमेजिनरी पार्ट तो इसका है ही कोई नहीं, तो ये इस एक्सिस के ऊपर लाया करेगा. बेसिकली अगर ये 4 है, ये 2 है, ये 6 है, यहाँ पे वो जो पॉइंट है 4, that's going to be here. अब ये जो नोटेशन लिखी हुई है लेफ्ट साइड पे ना, इसका मतलब ये है डिस्टेंस ऑफ पॉइंट Z from 4. Now 4 is a point on that diagram जिसका real part 4 है, कोई complex part नहीं है उसका, तो बस 4 ही है ये. Distance of point Z from 4 should be equal to 2. ये right side पे 2 है, यानी distance of point Z from 4. अगर आप तो इससे हमें एक जनरल एक बात पता चलती है. If you have anything like this, Z minus something, Z minus another complex number, whatever that is, इसका मतलब क्या होता है इस नोटेशन का? It means distance of Z from A. It's distance of Z from A. तो ये आपको इस नोटेशन का मतलब पता होना चाहिए, distance of Z from this other point. ठीक है, अब राइट साइड में जो भी हो इक्वल टू है, उसका मतलब क्या होगा? इस 4 पॉइंट से आपका डिस्टेंस इक्वल टू 2 होना चाहिए. बट एक सिंगल पॉइंट से एक फिक्स्ड डिस्टेंस है. रिमेंबर वो कौन सी शेप बनती थी? वी यूज्ड टू हैव अ सर्कल. सर्कल एक बनेगा आपके पास ऑफ रेडियस 2 एंड सेंटर 4. तो अब यहाँ पे एक सर्कल बना दोगे इस केस के अंदर. दिस इज व्हाट योर लोकस इज गोइंग टू लुक लाइक इन दिस केस. 4 पॉइंट से डिस्टेंस आपका 2 यूनिट्स होना चाहिए, 2 यूनिट्स के इक्वल होना चाहिए. This is what we get. So the locus of this point Z is circle with
center at 4 and radius equal to, ये आपका इसका लोकस बनेगा z minus 4 का मॉडुलस इक्वल टू, इसको आप पढ़ोगे किस तरह, distance of z from 4 should be equal to 2. Similarly, अब आप यहाँ पे देख सकते हो, अगर यहाँ पे वो equal to के बजाय कुछ और कर देता, if you had, let's say greater than 2, what would that mean? अगर यहाँ पे greater than होता, like this, that would mean it's all the part that is outside the circle. Z can be anywhere outside this. इस सर्कल के बाहर जो है ना, कहीं पे भी हो सकते हो, उसके अंदर नहीं हो सकते, ना उस लाइन के ऊपर हो सकते हो, सर्कमफ्रेंस के ऊपर, इसके बाहर कहीं भी हो सकते हो. That's what it means. कि z का 4 से डिस्टेंस 2 से ज्यादा होना चाहिए. That is what this notation would mean. ठीक है? Is this point clear as well? Any issues with this? Okay, good. Now let's do another example. अब यहाँ पे तो हमारे पास सिर्फ ऐसा एक नंबर था जो सिर्फ रियल था, ठीक है? Now what if we had something like this, let's say? What if we had z plus 3 minus 4 iota? This is equal to, let's say, something, let's say 3 or 5. What about this? How do we understand this thing? Abhi dekhiye, now this is the most tricky part that can come in this sort of thing. जहाँ पे आपको सर्कल की बात हो रही है, तो यहाँ पे क्या है, आपको सबसे पहले उसको उस फॉर्म में कन्वर्ट करना है जो हमने यहाँ पहले डिस्कस की थी, जिसका आपको पता है कि how to read that, and that form was z minus a. This is the form that you need. यानी a यहाँ पे एक कॉम्प्लेक्स नंबर है, right? It could be anything. In this case, you also have something here, some complex number. आपको क्या करना है, आपको इस फॉर्म में कन्वर्ट करना है. So z minus something like this, और उसका मॉडुलस. तो हम क्या करेंगे, इसको हम यहाँ पे प्लस की जगह ना यहाँ पे लगा देंगे माइनस, इसको हम करेंगे माइनस, और हम ब्रैकेट में लिखेंगे फिर ये पूरा कॉम्प्लेक्स नंबर, एंड दैट इज गोइंग टू चेंज द साइंस एज वेल. अगर आप माइनस बाहर कॉमन लेते हो, व्हाट डू यू हैव इनसाइड, ये 3 क्या बन जाएगा, इट्स गोइंग टू बिकम -3. ये -4 क्या बन जाएगा, इट्स गोइंग टू बिकम +4. So this is what you get. ये आपने इसको अपनी स्टैंडर्ड नोटेशन में चेंज कर लिया. This is always going to be important to convert in this standard notation. Z minus a. Now what this thing means is, let me write that here. What this thing means is the distance of z, that's our variable complex number, the distance of z from what? From this complex number जो आपने यहाँ पे लिखा, from -3 plus 4 iota. You see ये माइनस कॉमन लिया हमने बाहर, फिर आपको वो कॉम्प्लेक्स नंबर मिलेगा. It's a very common mistake कि आप इसको डायरेक्टली समझोगे 3 minus 4 iota से डिस्टेंस ले रहे हैं. नहीं, 3 minus 4 iota से डिस्टेंस नहीं है. You first have to take minus common and convert it to a form that looks like this, z minus complex number. Then what you have inside the bracket here is going to be the complex number that we are taking the distance from. So the distance of z from -3 plus 4 iota should be equal to 5. This is what it means here. ठीक है? अब इसको आप कैसे शो करोगे on an Argand diagram? What you will do is you will draw an Argand diagram like before. So you've got the imaginary axis here, you've got the real axis here. आप वो point plot करोगे जो उसने दिया, जो आपके पास है -3 plus 4 iota. Where is that going to be? It's going to be somewhere on the left side here. Let's see, हमारे पास -3 है कहीं पे, and this is 4 here. ये आपके पास वो point आ गया.
Now the distance from this point should be equal to 5, यानी कि आप यहाँ पे ऐसा सर्कल बनाओगे जिसका डिस्टेंस जो है वो 5 बने from that point. तो आप देख सकते हो कि वो कैसे बनेगा. So it may look something like this, let's say. इस तरह का आपका सर्कल बनेगा. ये आपका locus होगा of this point Z that we had there. All right, does that make this make sense to everyone? The point से distance कितना आएगा? इस point से distance आपका जो है that is going to be 5 units. And similarly यहाँ पे equal के बजाय कुछ और भी हो सकता है, greater than भी हो सकता है, less than भी हो सकता है. And you understand that similarly अगर less than होगा तो आप circle के अंदर होगे, अगर greater than होगा तो आप circle के बाहर होगे. So this is the case where you get a circle. So when do you get a circle? When you have something of this form. ये हमेशा आपका circle बनता है जब कुछ इस form में कुछ हो, z minus a equal to some constant. Right? It could be equal to, it could be greater than, it could be less than. लेकिन ये आपके पास एक साइड पे z minus a form में होगा और दूसरी साइड पे k होगा. ठीक है? अब ये a 0 भी हो सकता है. अगर a 0 होगा तो वो वाला केस बन जाएगा जो हमने पहले सबसे देखा था. This is the case where a is 0. This point से आप distance find कर रहे हो, that's basically the origin. So this is the same thing as saying z minus 0 less than 3. तो यहाँ पे जो दूसरा point था, that was 0, which was basically the origin. तो origin से distance हमारा 3 था यहाँ पे, 3 से कम था. तो in general, ये जो circle वाली form है ना, it's represented by this z minus a का modulus. ये हमेशा सर्कल बनेगा, भी डिपेंड करता है राइट साइड आपका वो इक्वल टू साइन हो, ग्रेटर देन साइन हो, लेस देन साइन हो, उसके हिसाब से फिर आप लोकस बना दो. ठीक है? दिस इज द केस व्हेन यू हैव अ सर्कल. एनी क्वेश्चंस ऑन दिस until now? Let's discuss the other case, the second case. Okay, good. Let's discuss the second case. अब एक आपके पास सर्कल होएगा. The second case is of perpendicular bisector. Remember perpendicular bisector कब आता था आपके पास locus के अंदर? Perpendicular bisector. If you remember from O levels, perpendicular bisector आपका तब बनता था when you had equal distance from 2 points. Okay, एक point A है, एक point B है. If you had to be equally distant from both the points, you would say the locus of those points would be the perpendicular bisector of the line joining A and B, something like this. है ना? ये आपका बनता था equal distance from 2 points. This is what we had there. Equal distance from 2 points. ये आपका perpendicular bisector वाला case बनता है. How do you represent it in complex numbers? So complex numbers में remember मैंने आपको क्या कहा? Distance from a point is represented like this. Distance from a point is represented like this, z minus a. ये आपको बताता है distance of z from a. This is how you read this notation, z minus a. ठीक है? Perpendicular bisector वाला case कब होगा? When you've got distance from one point on one side and you've got, let's say, distance from another point on the other side, so z minus b on the other side. So distance of z from b. So that is what we have on the other side, distance of z from b. So now how do you read this? It means what are the possible points z, what values of z, where can z be if its distance from this point A and its distance from this point B they're equal. Those two distances from these 2 points are equal. So remember, equal distance from 2 points, and यहाँ पे भी right पे लिखा है, it's always going to be a perpendicular bisector. ठीक है?
इस तरह की फॉर्म आपको क्या देगी? आपको परपेंडिकुलर बाइसेक्टर देगी when you're talking about z minus something equal to z minus something else, right? So let's consider a couple of examples of this now. So let's say you have z minus, or let's say plus 3, एक आपके पास ये है एक साइड के ऊपर, और दूसरी साइड पे आपके पास है z minus 4 plus 5 iota. So now this is what you're given, and you want to find this locus. Where can this point z be? इसकी क्या possible positions हो सकती हैं? What are the possible positions of this point z? You have to show that on an Argand diagram. Okay? How do you think about this? Again, let's draw the Argand diagram. But remember, उसके लिए उस पर कुछ draw करने से पहले हमें क्या करना पड़ेगा? We will have to convert this to our standard form. Standard form क्या है हमारी? Z minus A. That is what tells us कि A से distance कितना है. Both sides are not in standard form. दोनों standard form में नहीं है. हमें Z minus something चाहिए. On the left side, what will we do? We'll say this is Z minus -3. तो Z का distance -3 से बात हो रही है. 3 से distance की नहीं बात हो रही, -3 से distance की बात हो रही है. That's equal to Z minus, let's take this common, minus common ले लेंगे बाहर, अंदर क्या बचेगा हमारे पास? We'll have 4 minus 5 iota. So now what does this mean? This means distance of Z from -3 is equal to distance of Z from 4 minus 5 iota. This is what it means. This is how you read this. ये आपके पास दो points हैं. एक point -3 है और दूसरा point क्या है? दूसरा point is 4 minus 5 iota. How do you show this locus? You will draw the Argand diagram. That's going to look like this. ये आपकी Argand diagram बन गई. And you're going to mark those 2 points. So पहले तो imaginary और real axis mark करते हैं. This is our real axis. This is our imaginary axis on the y-axis vertically. Real axis के ऊपर we got a point here that is 3. ये 0 है. 4 दूसरी साइड पे यहाँ पे जाके आता है. Vertical axis के ऊपर, imaginary axis के ऊपर we have to go until -5 here. तो एक point आपका कहाँ पर आ रहा है? -3 के ऊपर आ रहा है. That's one point. Let's mark that here. So that's one point here. ये आपके पास एक point आ गया. ठीक है? And similarly, you mark the other point. That's 4 minus 5 iota. Where is that going to be? Real axis per 4, imaginary axis -5. So that's this point here. So basically, Z कहाँ पर हो सकता है? Z can be on the perpendicular bisector of these 2 points. ये दो points हमने यहाँ पे draw किए हैं. इनके perpendicular bisector के ऊपर Z कहीं भी हो सकता है. ठीक है? तो अब आप क्या करोगे? आपने ये दोनों points mark कर दिए. तो उससे पहले mark करने से पहले आपको क्या करना पड़ा? ये standard form में convert करना पड़ा. जब standard form में convert कर लिया, just mark those points on your Argand diagram and you draw the perpendicular bisector. Perpendicular bisector आप सबको draw करना आता है. Make an arc here, make an arc here. और इसी तरह आपके पास दूसरी तरह side to arcs बना सकते हो. And you'll get this perpendicular bisector. That's going to look like this. ये आपका हो जाएगा perpendicular bisector. इस तरह का कुछ होएगा. This is where Z can be. This is where Z can be. ये कहाँ पर आ रहा है? It's on the perpendicular bisector of these two lines, of these 2 points that we have. इन दोनों के perpendicular bisector के ऊपर Z can be anywhere.
Yeah, so in this case, let's say we were asked to sketch this. This is how it's going to look like. Yes. ठीक है, ये आपने perpendicular bisector draw कर दिया. You may also have to explain it कि वो क्या आपकी shape बनेगी. So you will say it's the perpendicular bisector of these 2 points. Okay, we will look at examples tomorrow, but this is what can happen. ठीक है, ये 2 points के दरम्यान में आपका perpendicular bisector बनता है in this case. Now similarly, as in the previous examples, हम यहाँ पे इसको change भी कर सकते हैं कि equal sign की जगह आपको कुछ और भी आ सकता है यहाँ पे. You could have greater than sign or the less than sign. वो भी हो सकता है ना. So what if you had, let's say, z plus 3 greater than z minus 4 plus 5 iota. So you've got the greater than sign here. What does this mean? ये point z कहाँ पर हो सकता है? If you have the वो equal to वाले तो मतलब था आप इस line के ऊपर लाया करोगे. जो perpendicular bisector वाली line थी उसके ऊपर लाया करोगे आप, ठीक है? But what if you have a greater than sign here? इसका क्या मतलब है? Locus कहाँ पर होगा इसका? Any ideas? Z कहाँ पर हो सकता है? Z की position कहाँ पे हो सकती है? यहाँ पे देखिए, think about this logically. आपको क्या given है? Z का distance -3 से ज्यादा है. -3 से distance ज्यादा है as compared to the distance from 4 minus 5 iota. यानी कि 4 minus 5 iota के करीब होएगा और -3 से दूर होगा. सो आप परपेंडिकुलर बाइसेक्टर के राइट साइड पे कहीं भी हो सकते हो, नीचे उसके. ये आपका सारा रीजन है जहां पे z आ सकता है, बिकॉज this is all the region in which your point z would be closer to 4 minus 5 iota as compared to -3. -3 से डिस्टेंस ज्यादा होएगा और दूसरे पॉइंट से डिस्टेंस कम होगा अगर आप परपेंडिकुलर बाइसेक्टर के नीचे हो. If you are closer to one point as compared to the other point, क्या मतलब होता था? परपेंडिकुलर बाइसेक्टर बनाते थे और जिस पॉइंट के क्लोज हो आप उस साइड वाला रीजन आप शेड कर देते थे. ओके, गुड. सो इसी तरह से लेस देन वाला केस, अगर यहाँ पे लेस देन होता, यू वुड से यू आर क्लोजर टू पॉइंट 3. यहाँ पे लेस देन लगा देते इसकी जगह पे. लेस देन वाले केस में आप -3 वाले पॉइंट करीब होते, अब ये लेफ्ट साइड वाला रीजन आपका सारा शेड हो जाता है इन दैट. तो डिपेंड करता है यहाँ पे साइन कौन सा लगा हो. इक्वल टू है, ग्रेटर देन है, लेस देन है, उसके ऊपर डिपेंड करेगा. This is the case where you have perpendicular bisector, and this is the form that you're going to see here. दोनों sides के ऊपर you will have something like this. You have z minus a, z minus some complex number on one side. दोनों sides पे इस तरह से modulus वाली form होगी. Modulus on both sides. ये आपके पास होगा, ठीक है? And now the last case. The last case is where we are talking about the arguments of the complex numbers. ठीक है, हमने मॉडुलस की बात की, अब हम क्या करते हैं, हम आर्गुमेंट की बात कर रहे हैं. First of all, let's do the simple case. So you've got argument of z equal to, let's say, some angle. Let's say this is equal to pi over 6. Now what does that mean? Where can z be in this case? अगर आपको पता है आर्गुमेंट ऑफ z जो है दैट इज पाई ओवर 6, जब आप डिग्रीज में उसको देखो दैट्स 30 डिग्रीज. वेयर कैन दिस पॉइंट बी? ये आपकी आर्गन डायग्राम है. दिस इज योर रियल एक्सिस, दिस इज योर इमेजिनरी एक्सिस. नाउ इफ द आर्गुमेंट ऑफ z इज पाई ओवर 6, व्हाट डज दैट मीन? Where can this point lie? It can be anywhere on this line, the line that makes angle pi over 6 with the horizontal. इस लाइन के ऊपर जो भी पॉइंट्स होंगे, कहीं भी हो सकता है ना, यहाँ भी हो सकता है, यहाँ भी हो सकता है, यहाँ भी हो सकता है, जहां मर्जी इस लाइन के ऊपर पॉइंट हो, उसका आर्गुमेंट क्या होएगा? उसका आर्गुमेंट pi over 6 होएगा. ये आपका रीजन है, दैट इज व्हाट यू हैव. ठीक है, डज दैट मेक सेंस? तो इस लाइन के ऊपर आप कहीं भी आपका वो पॉइंट z हो, उसका जो आर्गुमेंट होएगा दैट इज गोइंग टू बी pi over 6. Is that okay? That is what you have in this case. When you got argument equal to something, आपके पास इस तरह की एक लाइन होगी, इसके ऊपर एंगल होगा. बट आपके पास ये भी हो सकता है
if you have argument of z minus something, right? Now this is again a bit tricky, so please try to focus here. Argument of z minus something else, ठीक है? अब इसको आपने ज़्यादा ध्यान से देखना है. Actually do it on the next page. Argument of z minus something, let's say minus 2. अब इसका क्या मतलब है? Let's say this is equal to something, it's equal to pi over 4. Okay, this is 45 degrees or pi over 4 radians. What does this mean? इसका मतलब ये है कि 1.2 है कहीं पे, उसी तरह से आपने देखना है. So how do you read this? You say this means the angle of z from the point 2 is equal to pi over 4. Acha, now let me explain what this thing means. Angle of z from a point. एक point से angle की sense वैसे it doesn't make a lot of sense there, but the specific meaning of this. आप क्या करोगे? You see where that 2 is on your Argand diagram. 2 कहाँ पे होएगा? This is your real axis. This is your imaginary axis. You go on your diagram, you see where 2 is. 2 is going to be here. उस point के ऊपर आप क्या करोगे? आप एक horizontal line बनाओगे. In this case, it's already there, right? In this case, it's already there. So 2 के ऊपर जो horizontal line बनेगी ना, उससे इस point z का angle is going to be pi over 4, right? So इस point के ऊपर आप एक horizontal line बनाओगे और उसके ऊपर आप वो angle से line draw कर दोगे, pi over 4. So z can be anywhere on this line. इस line के ऊपर z कहीं भी हो सकता है. इस line का क्या मतलब है? 2 के ऊपर जो horizontal बन रहा है, उस horizontal के साथ जो angle है, that is pi over 4. ठीक है? So angle के केस में भी, argument के केस में भी आपको standard form में हमेशा convert करना पड़ेगा पहले. That standard form is argument of z minus a. So how you read this is angle of z from the horizontal line drawn at point A. तो जो भी point है उसके ऊपर आपने एक horizontal line बनाई, उससे जो angle बनेगा that is argument of z minus a. इसका ये मतलब है. ठीक है? Yeah, so Ramesh, let me come to your question. Argument of z minus a है ना यहाँ पे, because angle of z from the horizontal drawn at a. देखिए पिछला केस भी उसी के एक specific case example थी. Argument of z रखा हुआ था ना यहाँ पे. You can consider this to be argument of z minus 0 equals pi over 6. इसका क्या मतलब? 0 के ऊपर आप horizontal बनाओ. This is basically the origin. वो आपका horizontal बना लो already. उससे जो angle होएगा that's pi over 6. So that's equal to pi over 6 here. ठीक है? तो वो पहले हमने यहाँ पे एक simple वाली example की थी. This was a specific case of that. Okay, so now let's answer Ramesa's question there. So she's saying, what if it was not equal but less than pi over 4? All right, so let's say if it was less than pi over 4. So what happens in that case? If we had this given to be less than pi over 4 instead, अगर ये दिया होता, इसका मतलब ये है कि जो 2 पे horizontal line हमने draw की है, उससे जो angle है z का, that is less than pi over 4. अब इस line के ऊपर angle pi over 4 है, जो ये line draw की है, इसके ऊपर तो pi over 4 है. इसके अगर आप ऊपर चले जाओगे बाहर, तो pi over 4 से बड़ा हो जाएगा. pi over 4 से छोटा कब होएगा? When you are below this line. So the region below this line. Can you see this yellow shading? It's very light, I think, but is it visible? So it's everything
Okay, good. So it's everything below the line. उस line के नीचे आप रहोगे, that is less than pi over 4. ठीक है, इसी तरह greater than pi over 4 होता, आप कहते हैं ऊपर वाली साइड पर आप यहाँ पे. So that sign is going to tell you what region you're talking about. जब equal to होगा तो उस line के ऊपर होगे, less than होगा तो उस line के नीचे होगे, greater than होगा तो उस line के ऊपर. Similarly, let's do another example. Now we're almost ending here. Let's say we had argument of z plus 5 minus 2 iota, or let's say plus 2 iota equals something. Let's say it's equal to pi over 3. What do we do about this now? सबसे पहला step क्या करना है? We have to convert this to our standard form. Standard form हमारी क्या है? The standard form is that you need to have a minus after z. Z के बाद एक minus होना चाहिए और उसके बाद फिर bracket के अंदर वो complex number होना चाहिए जो भी है. So if we take minus common here, we have minus 5 inside and minus 2 iota inside. This is what we have. The point that we are considering is going to be minus 5 minus 2 iota. That's equal to pi over 3. So when you draw the Argand diagram for this, what you will do is you have the real axis, the imaginary axis. You will plot that point. That point is going to be somewhere there. So this is your real axis. This is your imaginary axis. Yes, so this is your imaginary axis. The point is going to be somewhere here. Minus 5 on the real axis and minus 2 on the imaginary axis. Let's say ये हमारे पास एक point है. ठीक है, अब हम क्या करेंगे, इस point के ऊपर एक horizontal line बना देंगे. So we will draw a horizontal here like this. इस horizontal से जो हमारा angle बनेगा of z, that's going to be pi over 3. So z can be anywhere on this blue line that we have drawn. और ये angle आपके पास यहाँ पे बना है. This is pi over 3. Okay, so this is what represents this line. Z can be anywhere on this line. आपका angle जो बन रहा है -5 -2 iota से, उस पे जो horizontal line है उससे जो angle बन रहा है, that is pi over 3. So this is how you draw this locus. Okay, ये आपने horizontal बना दिया और आपने इस तरह से एक line draw कर दिया. ठीक है? Is this clear to everyone? Any problems with this? Any issues with this? Okay, so similarly here as well, if you had greater than sign here or less than sign here, greater than होगा तो आप ऊपर वाला region consider कर लोगे. So if it was greater than, you will consider this upper region. अगर less than pi over 3 होता तो आप नीचे वाला region consider कर लोगे. ठीक है? So that you have to think about. So angle की कब बात होगी? जब angle आपके पास तब आएगा जब आपके पास इस form में कुछ हो, argument of z minus something. Now it can be equal to some angle. वो angle को आप alpha कह लो, let's say कोई भी नाम दे दो उसको, theta कह लो, whatever that is, right? It could be less than some angle, it could be greater than some angle. इन सारे cases में आप क्या करते हो? You draw a horizontal line at A. You draw a horizontal line at A. Of course, उससे पहले आपको इस form में convert करना होगा. And then you measure and draw a line at the given angle from this horizontal. Okay, you won't have to do it using a protector. आपको सिर्फ इसको sketch करना होता है. So you just draw a line estimating, and then you can label the angle there. That's going to be enough. So that is what you do. This is the third case. So एक case में circle बनता है, एक case में perpendicular bisector बनता है, और third case में आपके पास एक horizontal line बनती है और उसके ऊपर एक angle बनता है like this. ठीक है?